হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, যে ছায়া জগত জুড়ায়, যে ছায়া জগত জুড়ায়, নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, যে ছায়া জগত জুড়ায়, যে ছায়া জগত জুড়ায়, সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার, সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু বড় দুরাচার, নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে, নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে, বিদ্যা কুলে কি হইবে তার, বিদ্যা কুলে কি হইবে তার, অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া, অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া, অসত্যের সত্য বলি মানে, অসত্যের সত্য বলি মানে, নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে, নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাই চরণ দুখানি, ধর নিতাই চরণ দুখানি, নিতাইয়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য, নিতাইয়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা করো আস, নিতাই পদ সদা করো আস, নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী, নরোত্তম বড় দুঃখী
নিতাই মোরে করো সুখী, রাখো রাঙা চরণের পার, রাখো রাঙা চরণের পার। হরে কৃষ্ণ। निताई जो चरण वो पद्म सदृश होता है, कोटि चंद्र का तरह और शीतल, उसका छाया में पूरा जगत विश्राम ले सकता है। ऐसे निताई छोड़ के राधा कृष्ण पाना उचित नहीं है। दृढ़ करी जोर करके निताई का चरण पकड़ो। इस प्रकार संबंध जिसका नहीं है, उनका जन्म वृथा गया। वो पशु है, वो दुराचारी है। मुंह में निताई ना बोल के संसार का सुख में फंस गया। उनका विद्या, उनका वंश द्वारा क्या होगा? अहंकार में मत्त होकर निताई का पद से बिखर कर जो असत्य है उसको सत्य करके मान लिया। निताई का करुणा होगा, ब्रोज में राधा कृष्ण मिलेगा। निताई का 2 चरण पकड़ लो। निताई का चरण सत्य है, उनका जो सेवक है वो नित्य है। सदा निताई का पद मन का आशा कर लो। नरोत्तम बड़ी दुखी है, हे निताई मुझको सुखी कीजिए, मुझको आपका रांगा चरण का पास में राखिए। गोरा पहू ना भोजिया मोइनु, गोरा पहू ना भोजिया मोइनु। हे कहाँ गया? प्रेम रतन धन हेलाए हाराइनु, प्रेम रतन धन हेलाए हाराइनु। गोरा ना भोजिया मोइनु। अधने যতন করি ধয়নতে আগিনো, অধনে যতন করি ধনতে আগিনো। আপন কর মোদোষে আপনি ডুবিনু, আপন কর মোদোষে আপনি ডুবিনু। শত সঙ্গ ছাড়ি করি অসতে বিলাস, শত সঙ্গ ছাড়ি করি অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল যে কর্ম বন্ধ ফাঁস, তে কারণে লাগিল যে কর্ম বন্ধ ফাঁস। বিষয় বিষম বিষয় সতত খাইনু,
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু গৌর কীর্তন রসে মগন না হইনু গৌর কীর্তন রসে মগন না হইনু এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল অকার মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল অকার কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া নরতম দাস কেন না গেল মরিয়া নরতম দাস কেন না গেল মরিয়া গোরা না বজিয়া মইনু না বজিয়া মইনু हे मन मैं क्यों गोरा को भजन नहीं किया प्रेम रूप जो रतन और धन को हम हेला में हराइया खो दिया और जो धन नहीं है उसको जतन करके प्रकृत धन को मैं त्याग दिया मेरा अपना कर्म दोष में हम खुद डूब गया सत्संग छोड़कर जो असत है उसी में हम विलास किया इस कारण मेरा कर्मबंध लग गया विषय तो 20 तरह है मैं सदा वो खाया गौर कीर्तन रस में मैं निमग्न नहीं हुआ मेरा मन गौरांगों का ऐसे महान गुण में कभी रोआ नहीं मेरा मनुष्य जन्म अकारण बीत गया हे प्राण तुम क्यों मेरे साथ है मैं नरोत्तम दास क्यों नहीं मोड़ गया इतना गलती करके हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रजजन रंजन
যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ তন্ন প্রভু নিতা শ্রী অদ্বৈত হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই বল হরি বল হরি বল। ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিবার যোগাচার্য অষ্টতর শত কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি জয়। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি জয়। সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়। অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ ও তারিণে। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। নমো মহাপদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরতিষে নম। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবতম 10th canto 9th chapter 13th and 14th verse. ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব নাপি চাপরম পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগত ইয়ো জগশ্চয়।
Tang mattatmajamavyaktam martalingo madhakhajam gopi kolu khale damna babandho prakritang jatha no chantarna boirjasya no purvo napi cha paro purva parang boischanto jagato yo jagasya tang matmatmajama bhaktam martalingo madakshajam gopi kolu khale damna babandho prakritang jatha. No chantarto boirjasya no purvo napi cha param purva parang boischanto jagotoyo jagosyaya tang mattatmajama bhaktam martalingo madakshajam gopi kolu khale damna babandho prakritang jatha. Na chandana vaijasya na purvana picha param purva parang vaishchanta jagatoyo jagasya tang matmatmajama bhaktam martalingo madakshajam gopikolu khale damna bhavando prakritang jatha. Na chantarna vairjasya na purvana picha param purva parang vaishchanto jagatoyo jagasya tang matmatmajama bhaktam martalingo madakshajam gopikolu khale damna bhavanda prakritang jatha. Hare Krishna. Anybody else? More? Hare Krishna. I am reading the translation. The Supreme Personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior and no interior, no front and no rear. In other words, he is all pervading because he is not under the influence of the element of time. For him, there is no difference between past, present, and future. He exists in his own transcendental form of all times. Being absolute, beyond relativity, he is free from distinction between cause and effect. Although he is the cause and effect of everything, that unmanifested person who is beyond the perfection of the sense, that unmanifested person
who is beyond the perception of the senses, had now appeared as a human child, and Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. Hare Krishna. According to Srila Prabhupada's purport, in Bhagavad Gita, Krishna is described as the Supreme Brahman, Param Brahma Param Dham. The word Brahma means the greatest. Krishna is greater than the greatest, being unlimited and all pervading. How can it be possible for the all pervading to be measured or bound? Then again, Krishna is the time factor. Therefore, he is all pervading not only in space but also in time. We have measurements of time, but although we are limited by past, present, and future, for Krishna, these do not exist. Every individual person can be measured, but Krishna has already shown that although he also is an individual, the entire cosmic manifestation is within his mouth. All these points considered, Krishna cannot be measured. How then did Yashoda want to measure him and bind him? We must conclude that this took place simply on the platform of pure transcendental love. This way, the only cause. Advaitam achyutanadi ananta rupam addam purana purusham navajovanancha vedeshu durlabham adurlabham atma bhaktau govindamadi purusham tamaham bhajami. 5 chapter 33 verse from Brahma Samhita. Everything is one because Krishna is the supreme cause of everything. Krishna cannot be measured or calculated by Vedic knowledge. Vedeshu durlabham. He is available only to devotees. Adurlabham atma bhakto. Devotees can handle him because they act on the basis of loving service. Bhaktamam abhijanati javan chasmi tatata. Thus Mother Yashoda wanted to bind him. Ajnanotimirandasya jnananjana salakaya chakshunurmilitam jena tasmai Sri Gurave Namo. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dadati Padantikam. Here, the constitutional position of Supreme Personality of Godhead within the pastime of Supreme Personality in any fold is being submitted or placed. There is a slok. The slok from the Brahma Samhita is quoted Madhyam Purana Purusha Navajauvanancha. He is primeval and he is old, described in Purana. Still, he is always youthful. There is no influence of the age or time in his body.
evergreen, ever youthful, because time cannot control him. Same position of the spirit, eternal spirit. It is described in the Bhagavad Gita in few slokas. According to the Vedic scripture, in this creation, the Brahman realization is the topmost realization. Brahma Prapti. It is the greatest, but Krishna is greater than the greatest. For us, in general platform, it is the greatest. It is also the truth, the Brahman realization. The yogis, the Gyanis, especially the yogis, attempting year after year to attain Brahman realization. And it is coming from Krishna. So, Prabhupada here quoted, greater than the greatest. In this world, time is major factor. All are subject of this factor. Me, you, anybody else. My physics speaks how old I am. Your physics speaks how old you are. It is the impression of the time. There is a common over time, place, and circumstance. Nobody can overcome it. But it does not act upon Krishna any longer. Never. Either in past, present, or future. That's why he is the eternal judge also. For any of our sort of work, we always think so many factors. But we can approach nonetheless to Krishna. This factor is not activated upon Krishna. Herein, before and after, it is quoted, being good devotee of Krishna, being affectionate to Krishna, she is forgetful about this factor. It is the characteristics of love also. Engrossing love, अमोघ भालोबासा बोलते हैं, हाँ, अग्रासी भालोबासा, हाँ, बोलता है. लव किया, देयर इज इंग्लिश proverb, वो कुछ को जानता नहीं. Mother Jashoda is like that. Also, she is self-realized soul. As per the prescription of the Supreme Personality of Godhead, she has come down in this earthly planet to become mother of Krishna. Still, circumstantially, she has forgotten the influence of time, influence of unlimitedness, everything else. That's why, with a mere rope, he tried to bind Krishna. Like a worldly mother, he started to thinking about the destiny of Krishna, about the position of Krishna. If I don't bind her immediately, he will be more desperate
and he can leave the house anytime. So instantly it need to be controlled by a rope. It is the calculation according to her motherly affection and limitation. And it need to be. It is the symptom of love. If there is a very high profile guest has come, although he fold his hand, pay obeisances and go back, still from our part we have to arrange sofa, this, that. He may be tired, may sit for a while, may think, may meditate again more, and he need to be. While he get out, he will think how much arrangement they made for me to judge our affection and our honor upon him. Mother Jashoda, like that responsible mother, did everything. Otherwise, why Krishna surrendered him being son? Krishna actually surrendered him being son. You treat accordingly my surrenderance. Then I will tell you your real mother. You continue the responsibility of motherhood. To continue the responsibility of the motherhood, Mata Jashoda did everything. Knowing or unknowingly, he is unlimited or not. It does not matter for any family whether his son, either scientist or big officer or big rich man, as he visit his own house, his native place, the native people will treat him according the past relation. And he deserves to be like that. And within the heart he hope like that. Otherwise you will refer it, you have forgotten me, like a alien people, not your own people. You perform your rituals first, then you perform your higher rituals. It happened in the case of Mother Jashoda. And through it, the mellow or essence of real motherhood is been sparkling, and we can understand the position of mother. Mother Jashoda could not behave like a rishi or muni, like one self-realized person. How the post of her motherhood will be observed then, the mellow of household love will not would not manifest through it. That's why Mother Jashoda was very much cautious about her motherly position. And it is the essence of teaching of the Krishna's childhood pastime. Being a common mother and being a common son both manifested enormous reality, enormous mellow, and eternal factors. Already Krishna killed three personality: Putana, Trinavartasur, and Shakatasur. He already manifests his mighty, all-pervading mighty. Still Mother Jashoda, not counting it, even not she is bewildered through it. To become bewildered
by the mighty of the sun. It is not good. अब मेरा पैसा देख के विमोहित हो गया, मेरा सम्मान देख के विमोहित हो गया, आपके साथ जो रिलेशन है वही मेंटेन तो करिए. I am your old known person, now I am rich man. So you have changed your position and treatment. It is the Maya, lobe, everything is. Mother Yashoda did not eat. Nowadays, very commonly, everything is conversed. Still, Prime Minister of India be treated in his own native place like a neighbor. And you hope first eat, then you pay my due respect. Still, every man within their heart release and remember in same transaction, same connection, and it manifests new realization, how gradually I've been flourished. It is the step to become molded. Mother Yashoda, with a keen care, observed it. And so Srimad Bhagavatam have been so much mellowful reading matter. In the introduction, Prabhupada quoted one verse. The translation is, although Srimad Bhagavatam may not be made scrutinizingly or faultlessly, still from the time immemorial, Grinnanti, Gayanti, Srinanti, Sadhava, all the saintly person accept it, sing it, Srinanti, Gayanti, and hear it. We need not to check. To become checker, we need to be expert first, and that is not possible. What is ISKCON is, in first hand you cannot judge. You have no so much power, not so much knowledge, experience, position also. If you have no position, I don't allow you to do it. Position is a major factor in the material world. According to your gain, knowledge, money, nobody bother you. You have to show your position. Then I allow you to enter. But Aroha Paddhati, Avaroha Paddhati. You have seen so many established persons take the refuge or shelter of it. Through their smiling face, they are speaking, I have not been cheated. So there is no problem to surrender in my case. Everywhere it used to happen. Then gradually, the experience, knowledge increases. According to your limitation, you start to check it. They are not so much furious or aggressive. They allow everything. So we can talk, quarrel, tussle with them. They will not expel instantly. हर कुछ में सहनशीलता चाहिए. वो लोग टॉलरेबल है. मेरा दो चार बात में असम्मान बोध करता नहीं, বা প্রতিশোধ लेने का तैयारो करता नहीं. So then, according to my limitation, I can argue with them. People also look it. How much they are tolerant. Enviousness. Always people thinking, if I tell this unfair word, what action will they
derive. Will they be inimical before me? Bhagavatam is all tolerant. So much Santo from the previous time have accepted this. We need not to check it so much. As I get chance to enter here, I can proceed without fear. जुग जुग से कितना संत भागवतम को ग्रहण कर रहा है. लगता है कोई कोई श्लोक उतना पोटेंशियल नहीं. गल्प है ना, युक्तिवादी समाज इसको पोटेंशियल बोलेगा नहीं. अरे हम गल्प का आदमी है, हम बड़े बड़े डेफिनेशन चर्चा करता है. हंसी मजाक का खोराक कोई जगह में नहीं है. हंसी मजाक का खोराक भी बहुत है. आई नीड नॉट ईट, but it is fabricated by Vyasdev to make favor, as we are very much inclined in this material world. We don't confess it, how much fallen we are. पोशाक पहनने से ही सब लोग भद्र लोग हो जाता है. मन में किया है बोलेगा तो नहीं ना. The Vyasdev did know it. That's why he placed so much stories as from the innermost core of our heart. It can remove all the inebrities, what are stagned in that point. व्यासदेव जानते थे मन का कोने कोने कितना मैला है. उसको दूर करने के लिए एक गल्प को उन्होंने सजाया. एक गल्प साधारण भी लग सकता है, असाधारण भी है. इसीलिए कॉज एंड एक्शन वादी, कार्य कारण संपर्कवादी. वर्तमान समाज में युक्तिवादी भी बोलता है, युक्तिवादी ऑर्गेनाइजेशन भी है. वो विज्ञान निर्भर है, इसका विरुद्ध. वो लोग इसका बहुत दोष देख सकता है, लेकिन ये उत्तर वो नहीं दे सकता है. इतना सहज सरल चीज युग युग से क्यों विद्यमान है? तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों दीर्घकाल विद्यमान नहीं है? समय का हिसाब में तुम हो गया, अब समय का हिसाब में 2 दिन बाद तुम भाग जाते हैं. लेकिन भागवतम इनका ग्रेटनेस लेके जीना है. इधर तो 5000 साल हो गया. एक गल्प पुराण में भी है, कुछ गल्प महाभारत में भी है. आप पढ़ सकता है, हम पढ़ा एक जगह में. ये महाभारत स्वर्गलोक में भी है, आउट डिटेल्स है, ये भी है. हम अल्पों में संतुष्ट है. वी आर सेटिस्फाइड in the minimum amount, but the demigods are not satisfied with the limited amount of narration. They have much time, much intelligence, much curiosity. Their depth is much more than us, so they need much more elaborate scripture. And that is going on. In the creation, there are so much stories about the heavenly people, royal people. Out of it, Vyasdev has chosen some selected stories which are favorable of the human society or devotee society or spiritual aspiring society. And he had capacity to fabricate what should be first, what should be second, what should be third. So there is 12 canto,
more than 300 chapter to cope with our need. And he directly told it is the natural commentary of the most erudite Vedic scripture, Vedanta and Vedanta Sutra. Its creation is not from common level. Its creation from the topmost level. To comment on Vedanta or Vedanta Sutra. So it is not common. It appears to be common, like a medicine, tasty, but it acts within, like poison. Some poison is not bitter. If you take, bad action will happen within stomach or anything else. Tasty. If it would very much difficult to enter, its popularity will decrease. As it is easy to access, that's why its popularity is bigger. In village society, in town society, in temple society, in mercantile society, भागवतम इज रेड, होता ही है, हर जगह में भागवतम हो रहा है. ऑल आर नॉट सेम क्वालिफाइड. वेदांत सूत्रों का तो कोई आशोर नहीं होता है, पहले वो दूर करके रखता है. भागवतम व्हाई इज सो मच पॉपुलर? इट इज मेलोडियस more than more than महाभारत also. वहां पे बहुत रैशनलिज्म है, स्टोरी आफ्टर स्टोरी, इतना मेलोफुल नहीं है. ऑल टाइम देयर इज ए मेलो ऑफ लव, devotion. It touches the heart. But other scripture don't touch so much. Everybody know Bhagavad Gita is the greatest. But it needs much concentration, much intelligence, reasoning mind, special qualification. But a layman, while he hear about some story, then and then he will be stopped. क्या बोलता है देखे तो, अरे बेस मजा तो है, ऐसे अनुभूति होता है. भगवत गीता में पता लग जाता है ज्ञान का भंडार है. भाई अभी ज्ञान का जरूरी नहीं है. और रास्ता में घूमते हैं, ये ज्ञान लेगा तो वो ज्ञान बुद्धि हल्का हो जाए. जाता भी है, इधर कंसंट्रेशन देने से. कोई मैडमैन, एनी क्या बोलता है, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी मैन, बट इट नीड्स सम पायस एक्टिविटीज. It is given or imposed by God himself. Those who are not fortunate enough, they can take the contact of Srimad Bhagavatam. It is the vibhuti, special power. In every field, everybody cannot enter. The entrance power ticket is the past activity, soft mind. So here, the main subject, Krishna has no exterior or interior. अंतर बाहिर बोल के अलग कुछ नहीं, सम्मुख पश्चात बोल के कुछ नहीं. नो फ्रंट नो रियर. रियर शब्द होता है, हॉल में रियर सीट बोलता है, पीछे वाला सीट को. ही इज ऑल परवेडिंग. अरे सरकार का प्रभाव इधर है नहीं. पुलिस थोड़ी आता है, कोई ऑफिसर चेकिंग में थोड़ी आता है, कर लो.
कृष्ण ऐसे नहीं, हम हुकिंग करता है इलेक्ट्रिसिटी कौन देखेगा, वो 6 महीना में कोई आएगा। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं, ही इज ऑल परफेडिंग बाय हिज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ही रीच एवरीवेयर, ही क्रीप एवरीवेयर, so all pervading because he is not under the influence of the element of time। समय का प्रभाव में प्रभावित नहीं है, समय का प्रभाव हर जगह में है। दुनिया को इस ढंग से प्रचार करता है, रात में करो भाई, दिन में ना करो, कोई देख लेगा। रात में पुलिस आने पर भी देखेगा नहीं, ऐसे विचार तो हर टाइम चलता है। टाइम का, दिन रात का प्रभाव कृष्ण का ऊपर कुछ नहीं है। सत्य त्रेता दापर कली का प्रभाव इस्कॉन में नहीं है। लेकिन ऐसे गल्प सुना, सत्य त्रेता दापर कली, त्रेता तो 3 शब्दों से आया, सत्य दापर त्रेता कली, ऐसे सिस्टम था। अहल्ला को विमुक्त करने के लिए भगवान युग को ही चेंज कर लिया है। टाइम का ऊपर कितना प्रभाव इससे बड़ा हो सकता है। उदाहरण, कोई मनुष्य का, नॉट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग और डेमीगॉड or any devil person have so much power. Whether Hiranyakashipu, Ravan, Kongso had such power? No power. It is the special for Lord himself only. Brihaspati, Shukracharya, big stalwart personality. They can give life even a dead man. They showed in Devata Asur Yuddha. But Krishna has a one exceptional power to control the time and change the time. हम जिस दिन पहले एक बात हम शायद पुरी का दयाल में और गुंडीचा मंदिर का दयाल में पढ़ा पहले, अरे जुग चेंज कर दिया। कभी कभी कुछ सुना जब था होके बोट गया, ऐसे बोलता है ना, यहाँ ये हुआ होगा। टाइम का ऊपर सो मच, क्या बोले इंग्लिश शब्द ऑल टाइम निकलता नहीं, एनॉर्मस कंट्रोल, ये शब्द ठीक नहीं है। और 2-3 गुड शब्द है, हम स्टॉक करने का कोशिश करता है और मेहनत करना पड़ता है। बिकॉज एब्सोल्यूट बियॉन्ड रिलेटिविटी, रिलेटिविटी थियोरी है आइंस्टाइन का, हाँ, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है, अपेक्षिक तत्व, अपेक्षिकतावाद। अभी का समाज में बहुत चलता है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत लेटेस्ट डेफिनेशन है, पिछले 30-40 साल से चल रहा है। कृष्ण इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ एनी रिलेटिविटी। तुम अच्छा है, लेकिन नोएडा में बहुत अच्छा है, तुम उससे अच्छा है, ये होता है रिलेटिविटी। तुम उससे अच्छा है, उससे है कि है नहीं हम विचार करके देखा नहीं भाई, इतना ही संतुष्ट रहो, उससे अच्छा है। इट इज द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जगत संसार थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में है, एब्सोल्यूट में नहीं है। लेकिन भगवान एब्सोल्यूट है, परम है, बियॉन्ड रिलेटिविटी। वो जो भगवान का, ब्रह्मांड का समस्त यश, समस्त शक्ति, ऑल कोई का ऊपर इम्पोज हो नहीं सकता है, सब सब्जेक्ट ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का थियोरी में फंसा है। ही इज फ्री फ्रॉम डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ए करने से ए होता है, कृष्ण का कुछ करके आना पड़ता नहीं। मन हुआ, देवकी का संतान हो गया, होना अभी जरूरी है। और कुछ कायदा करना है, देवकी को पास रहेगा नहीं, यशोदा को पास चल जाएगा। वसुदेव माथा में ले गया, लेकिन अंतरंगा शक्ति द्वारा तो भगवान ही किया, कुछ जटिलाई कर दे। कंस को
विभल करना है, इसलिए तो किया गया ना। इजी वे में करने करे तो कंस पकड़ लेगा, हम उससे जटिल रहना पड़ेगा। तो कृष्ण कर दिया। ऑल्दो ही इज द कॉज, ओहो सॉरी, हम ज्यादा कर दिया। अब कुछ बोल सकता है मौन होने से, हाँ, नॉट लाइक ए टीचर और नोअर, हम बात कर सकता है, इसीलिए बोलता नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए बोलिए बोलिए। Hare Krishna. हरे Thank कृष्ण। you very much, Prabhuji, for glorifying Srimad Bhagavatam so nicely. Uh, uh, as you said, Srimad Bhagavatam is full of love and devotion to Krishna. So, but still,